Hi guys, what's up? How are you doing? Everyone is absolutely fine. So, is everything absolutely cool, chill, relaxed? Life is good. चालू करते हैं. Yesterday we were talking about basics of environment. Why do we have to study environment? What should be a strategy for environment? Each and every topic which you're supposed to know about environment. That you're not supposed to rely on static portion of environment. You're not supposed to rely it on books. All right. So I hope you will not forget about this. Okay. So like very important things which we have to cover, and today I'm going to start with my favorite things. The only way to know about whether an exam is or how it is to go for two things. First of all, see what is the cutoff of the paper, and second of all, see what are the questions of the paper. Do you agree with me? Obviously you have to agree with me because I am teaching you, but I don't agree with me for the sake of it. मान लो कि कट ऑफ बहुत ही बेकार जा रही है, 5 नंबर कट ऑफ जा रही है, तो इसका मतलब वो पेपर बेकार है, मतलब जो एस्पिरेंट दे रहे हैं वो बेकार है उसको, राइट? और इसी पेपर में मान लो कट ऑफ 150 जा रही है, तो मतलब बहुत टफ पेपर होने वाला है, राइट? So always remember that a paper is decided only and only by previous year question papers. Now I'll again reveal you a good secret. Majority of the teachers don't memorize these previous year question papers, and they also read some kunji. All right. So like direct जो source होता है उससे कोई पढ़ता नहीं है, and then it becomes a huge problem. All right. Everyone is reading a kunji. The kunji guy is also reading a kunji from somewhere. Okay, so that is the huge problem with these previous year question papers. And obviously, no one should claim that 100% are correct. Even UPSC don't know whether it is correct or not, right? So UPSC does not know whether it's correct or not. So forget about us mere mortal, because um, no one is sure about this. So let us get started. We will cover 3 year current affairs today: 2011, 2012. All right, and 2013. तो अच्छे से पढ़ेंगे जितना हो सकता है. ट्राई टू बी 99% एक्यूरेट, ठीक है? अगेन आई डोंट क्लेम टू बी 100% एक्यूरेट, बिकॉज जब यूपीएससी को ही नहीं पता, जब भगवान को ही नहीं पता कि मतलब मोक्ष कैसे मिलेगा, भगवान खुद ही दूसरे भगवानों के दर दर पे भटक रहे हैं, तो कहाँ से आंसर लाओगे? राइट? कभी भी घटिया बेकार से दो कॉडिफिकेशन होते हैं, जैसे नथिंग कैन एस्केप फ्रॉम ब्लैक होल, ऐसा काफी एक लाइन बोली जाती है, बड़ा स्टेटमेंट बोला जाता है. इवन लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम ब्लैक होल, एस्केप वेलोसिटी ऑफ ब्लैक होल इज मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट, ब्लैक होल absorbs everything, that is why it is black. Then comes Stephen Hawking, he talks about when black holes will dissipate over a period of time, black holes release what is called Hawking radiation, and that's how they got destroyed. So basically both the statements are correct, yes, in truest sense of the word, black holes से चीजें escape होती हैं, but in like at your level it doesn't matter. Do you understand? Both the statements are technically correct, depends on the interpretation of the examiner. All right. Someone can say stem cell is a futuristic technology. Yes, 100% correct. Stem cell will be huge in future. Someone can say already stem cells is being used to treat patients. Answer is yes, 100% correct. So it depends on the interpretation of the examiner. Do you understand this simple line? Artificial intelligence is the future. Yes. Artificial intelligence is used in the present. Yes. Artificial intelligence was used in past. Yes. All the three statements are absolutely correct. So it depends on the interpretation of the examiner. Do you understand? तो ऐसे फर्जी से स्टेटमेंट होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता. ऑल राइट. So it's not like earth is bigger than moon. Yes, 100% correct, there is no doubt about it. No two people will question it, right? But let's say someone says sun rises in the east, sets in the west. Now it is a debatable question. Yes, it's a common knowledge that sun rises in the east, sun sets in the west, but sun could not care less about earth. Okay, sun neither rises nor sets. It's the earth which revolves around the sun at a tilted axis, and that is why you perceive as if the sun is rising and a setting. Do you understand? सो टेक्निकली स्पीकिंग दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. तो बचपन से जो बताया गया, मेरा पूरा बचपन एक झूठ था, राइट? बिकॉज माई इंग्लिश टीचर, माई साइंस टीचर, एवरी टीचर, प्रिंसिपल, टीचर्स, एवरीवन सेज सन राइजेस इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट, बट दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट. ओके, so do you realize the point? Again a very bad statement to do. Okay, they say that sun is static but earth revolves around the sun. Have you heard this statement? Galileo also made, Copernicus also talked about it, heliocentric theory, that sun is static, earth revolves around the sun. But that is also a false statement, sir. As I told you, sun revolves around the galactic center, which is a black hole, which is around 225 million years it takes, right? Then they say that solar energy is renewable, it is infinite, it will be there forever. That is a wrong statement, because after 4 billion years sun will die. So do you understand the point? So all the statements are technically false if you actually go for science. Do you understand? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जब अर्थ ही नहीं बचेगी तो कहाँ से आएगी एनर्जी? तो सन ही नहीं बचेगा तो कौन सी एनर्जी, राइट?
So they say that if sun goes away tomorrow, there will be no life on Earth. Answer is wrong. At Mariana Trench, life will still exist, right? Because it's based on sulfur-based slide. Slides are not moving because only I am moving my mouth right now. Slides are not moving. I'm not teaching you from slides. I'm just teaching you from common sense. All right. सबसे पहले कॉमन सेंस डेवलप कर लो. स्लाइड्स तो मूव करती रहेंगी. पूरे कॉलेज में 4 साल 5 साल 6 साल निकाल दिया यार आप लोगों ने वो स्लाइड्स के चक्करों में. क्या रखा है उससे? हुआ क्या? क्या उखाड़ लिया? अभी बिना स्लाइड के पढ़ लो एक बार, ठीक है, फिर बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है. So the point being is that it depends on the interpretation of the examiner, right? कभी कुछ पूछ लेते हैं कौन गार्डियन है, कौन क्या है. लोग अपने बाल नोचते रहते हैं कि वहां तो ये बोला था, वहां ये बोला था, यहाँ पे ये बोला था. मेरे पापा तो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है, वो ये बोलते हैं. मेरे पापा चीफ जस्टिस इंडिया के, वो ये बोलते हैं. मेरे पापा तो प्रेसिडेंट है, वो ये बोलते हैं. So basically it's a never ending debate, all right? So the point is that stupid questions do exist. Stupid examiners also exist who have half baked knowledge. Let's say uh, there are a lot of things. Let's say blood is red. Yes, blood is red, but blood is also blue, blood is also green, blood is also colorless. It depends on which blood you are talking about, which animal you are talking about. Do you understand? So it is true. Yes, blood is red. It is true, but blood is also not red. That is also true. So it depends on the interpretation of the examiner. Is it absolutely beyond doubt has been hammered in your head that no one can be 100% correct? Because even the examiner does not know what is the answer, because it depends on the whims and fancies and the interpretation of the examiner, and also the person who is picking up the paper, and depending on the salt content in his samosa. So that is the simple point. If it mood is good, he'll give you good marks. Mood not good, may cut marks. Depend on the salt content on the samosa, sugar content of the tea. Right? ठीक है, चालू करते हैं. All right. So prelims previous year question papers part 1. Okay. So I hope, but again now other people take it in extreme कि रोमन तो बोलता है किसी आंसर का कोई क्वेश्चन सही होता ही नहीं है साहब. किसी आंसर का कोई क्वेश्चन सही नहीं होता. हमें पढ़ के क्या मिलेगा? दुनिया बर्बाद है, दुनिया तो खत्म होने वाली है, पढ़ के रखोगे क्या? That is the other extreme. All right, don't go there also. As I told you, 90% of the answers are absolutely correct. The guy in UPSC and Roman Saini will agree on it. Do you understand? I will agree with him. 90% are absolutely correct. If we discuss 100 questions, 90 we will agree 100%, 100%, no doubt about it. All right. बट दुनिया खत्म नहीं हो रही है. 90% पे फोकस करो, 10% के पीछे मत रहो. All right. Don't cry after the rest 10%. Focus on this bloody 90%. This is called as important stuff in life. But people will keep on crying. Optional हट रहा है कि नहीं हट रहा, एज लिमिट कम हो रही है कि नहीं हो रही. ऑल राइट. सो अब की बार पायलट पेन से लिखने देंगे कि नहीं देंगे, अब की बार चीटिंग कैसे करेंगे, हिंदी का पेपर कैसे पास होगा, फलाना फलाना फलाना. So let's get started with previous year prelims question. This is one of the single most important thing which you have to do if you want to crack this examination. Most of the time you'll have this doubt in your head कि ये article important है कि नहीं, right? ये question important है कि नहीं, ये topic important है कि नहीं, all right? ये दुनिया important है कि नहीं. उसका last वाले का तो मैं answer नहीं कर सकता. But whenever it is the Hindu, or whether it is the NCRT, or whether it is the Yojana, or whether it is the PIB, or whether it is my lecture, if you want to gauge if something is important or not, just remember, is it frequently asked in last 9 years question paper? All right. All right. All right. All right. Just go any consolidated source for previous year question paper. मैं क्या यहाँ पे दही बड़े थोड़ी बेच रहा हूँ, मतलब वही तो है, ये consolidated source ही तो है previous year question paper का. और कर क्या रहा हूँ मैं यहाँ पे बैठ के? This is literally the most consolidated source of previous year question paper you'll ever get. So let us get started with 2011. All right. Biodiversity forms the basis for human existence in the following ways. All right. Soil formation will soil formation happen. Yes, 100%. Biodiversity के बिना soil कहाँ से बनेगी? Obviously बन ही नहीं सकती. Right. Prevention of soil erosion. Yes, बचपन से पढ़ते हैं पेड़ लगाओ soil erosion बचती है, पेड़ लगाओ soil erosion बचती है. Recycling of waste. Yes, there is no doubt about it, and no, not a single one of you should ever doubt this, right? It is simple, it is very clear, and it is understandable. And obviously, without biodiversity, there cannot be any pollination of crops. This is very stupid, very easy question. We realize UPSC does not ask over the top hard questions, all right? In the due course of time, when we discuss 2011 to 2019 question in these ungodly hours, you will realize that UPSC does not ask. Sir, आप थोड़ा slow बोल सकते हैं, please. 2011, 2019, when we go through these 9 years, we will realize that there are a lot of important questions. All right. So
टू स्लो हो गया, चलो ठीक है 1.5x पे बोलते हैं, पहले 2.5x चल रहा था, अभी 0.75x पे चले गए, बीच में पकड़ते हैं 1.5x, ठीक है, डन। आई होप एवरीवन इज हैप्पी। तो देखो सीधी सी बात ये है कि जब हम ये डिस्कस करेंगे अगले 100-150 क्वेश्चन, तो उसमें आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि 60% ऑफ देम आर एब्सोल्युटली नॉर्मल क्वेश्चन, ऑल राइट, you understand, very very normal, very very simple. Like this is a very simple question, right? If you study ncrt, there is no doubt about it that you will get it right. Is it clear? ncrt पढ़ ली तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, ऑल राइट, बट ज्यादातर लोग बोलेंगे एनसीईआरटी पढ़ ली और क्या करें और क्या करें। सो आंसर इज डी 1 2 3 4। ओके, जब आप फास्ट बोलते हो लगता है रिकॉर्डेड रोबोट बोल रहा है। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि मैं रोबोट हूँ कि नहीं? ऐसा कैसे पता चलेगा कि रोबोट है कि नहीं, तो बता सकता है? कैप्चा, मैं आपको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, इतना एडवांस रोबोट तो होंगे ही ना कि भाई कैप्चा तो बता देंगे कम से कम। यस, श्रेय शाशांक इज राइट, इट इज ट्यूरिंग टेस्ट, बिल्कुल 100% सर। क्या बात है, साइंस पढ़ी है सर आपने अच्छे से। तो ट्यूरिंग टेस्ट इज अ टेस्ट वेयर यू कैन आइडेंटिफाई, राइट, एट अ मैक्सिमम टाइम हाउ मेनी कोर्सेज वी शुड एनरोल। इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कितने आलू के पराठे खाने चाहिए ब्रेकफास्ट में? भाई कई लोग आधे से पेट भर जाते हैं, कई लोग चार भी खा जाते हैं। So it depends on the capacity, how much you can take. Okay, totally on that. So if you are a new person, I would suggest that you go all in. You like watch all the videos, try to learn. Okay. So biodiversity is the sum total of diversity which exists at all levels of biological organization. It plays a role in ecology. All the options are absolutely correct. ठीक है, पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही है। पॉलिनेशन वाला पॉइंट सर प्लीज बता दो सर। आपने डायलॉग सुना होगा ना, घटिया सी मैगजीन में होता है कि कल को अगर हनी भी चली गई तो सारे ह्यूमन बीइंग एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, बहुत ही मतलब सुना होगा ना, बहुत ही कॉमन है। सो ऑब्वियसली मतलब हनी बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिनेशन, हनी बीज पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिनेशन, बैट्स कॉज पॉलिनेशन, वाटर कॉजेज पॉलिनेशन, सब कुछ ही तो करता है। ऑल राइट, which one of the following is not a site for in situ method of conservation of flora? ऑल राइट, इन सीटू का मतलब क्या होता है बचपन से? ओके, सो इन का मतलब इनसाइड, सीटू का मतलब साइट, ऑल राइट। शेर कहाँ पे पैदा होता है? शेर क्या दिल्ली के जू में पैदा होता है? आंसर इज नो, शेर यूजुअली जंगलों में पैदा होते हैं, राइट। जंगल क्या होता है? जंगल होता है आपका बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। ऑब्वियसली पैदा तो आपके घर पे भी हो सकता है, बट नेचर में कहाँ पैदा होता है? 10,000 साल पहले कहाँ पैदा होता था? दैट इज द राइट आंसर। ओके, सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेक्रेड ग्रोव्स, all these are example of insight. Is it absolutely clear? All these are example of insight. साइट में जहां पे पैदा हो गया उसको बोला इन सीटू, और साइट के बाहर उसको एक्स कम्युनिकेट कर दिया तो उसको बोला एक्स सीटू। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल फंडे हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डू यू नो inside every biosphere reserve there is a national park or wildlife sanctuary by and large? Everyone knows that, everyone knows that, everyone knows that, everyone knows that. बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क कोई अलग अलग एंटिटी नहीं है। नेशनल पार्क इज पार्ट ऑफ द कोर रीजन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन, ऑल राइट, ऑल राइट। सो wildlife sanctuary, sacred groves, always remember these are the four in situ sites, usually that is what we cover. So obviously national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve goes out of the picture. Such a simple question, right? Botanical garden is the right answer. It is a type of ex situ type of method because you are making a separate garden for growing a certain type of plants. ठीक है, simple question है, कोई डाउट है? कुछ नहीं है। So next time whenever you hear the word biosphere reserve, national park, wildlife sanctuary, आपके जो एंटीना है वो खड़े हो जाने चाहिए कॉकरोच की तरह, all right? That it is an important topic. Every year 1 or 2 questions are asked from this, so we have to cover it, all right? So in situ conservation implies conservation within an organism's natural habitat. Obviously botanical garden did not exist. Did they exist 5,000 years ago? Answer is no. Their Gir national like Gir existed, right? वो तब भी लॉयन थे 10,000 साल पहले, अब भी लॉयन है, right? It is the same place. You can call it whatever, national park, wildlife sanctuary, whatever. But botanical garden did not exist 10,000 years ago, right? कॉमन सेंस लगाना है और सही आंसर कर देना है। तो इसका आंसर हो गया बी से बाबा। तो आगे बढ़ते हैं, चालू करते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली, व्हाई आर वी डिस्कसिंग दिस, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस? पहला पॉइंट है साहब, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। इफ यू कवर 9 years क्वेश्चन, आई कैन गारंटी यू दैट यू विल फाइंड सम और द अदर गेटिंग रिपीटेड। And second is whenever you get an emotional about Hindu article, or if you get emotional about anything at all, you will be able to take a rational decision and not an emotional decision, all right? So बायोडाइवर्सिटी 90% कचरा आपकी लाइफ में आने वाला है, उसको फिल्टर करने के लिए एक फिल्टर चाहिए आपको। दैट फिल्टर इज मेड अप ऑफ सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ऑल राइट।
बहुत ही सिंपल सा तरीका है. एनी एग्जाम कैन बी क्रैक्ड थ्रू दिस अप्रोच. Any exam in the world can be cracked through this approach. All right, you have to develop a huge filter of what to not to study. All right, and you have to go through syllabus and previous year question papers in detail. Any exam of the world can be cracked through this approach. I have a firm belief. All right, each and every exam in the world. Biodiversity is normally greater in lower latitude as compared to higher latitude. So lower latitude ले लेते हैं. Western Ghat is an example of lower latitude. 100% right. 100% go out in a very lower latitude. And let's say Norway, Arctic, Antarctic. These are example of higher latitude. Yes. So it is a very common sense answer. All the equatorial country like Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Indonesia, India, they are very much biodiverse, right? So along the mountain gradients, biodiversity is normally greater in the lower as compared to higher. इसका एक फर्जी से एक डायलॉग भी होता है, एल टी मिमिक लेट टी. ये नाम सुना है कभी? एल टी मिमिक लेट टी. ऑलराइट. Altitude mimics latitude. Everyone must have heard about this line. Altitude mimics latitude. Latitude mimics altitude. Whatever the way you want to call it. So अगर पहला सही है तो दूसरा तो सही होना ही है. एल टी मिमिक लेट टी, राइट. एल टी मिमिक लेट टी मिमिक लेट टी मिमिक लेट टी. सो पहला सही है तो दूसरा तो सही होना ही है. Obviously, if you go on the base of the Himalayas in Dehradun, Mussoorie, right, there is a drastic difference in Dehradun versus Mussoorie, right? When you go 3 kilometers up, so you will see that less species are present, except if you go 3 kilometers up, सब गायब हो जाएगा. You'll go beyond tree line, and so yeah. So just remember that, and we move on from there. Is it absolutely clear? Is it absolutely clear? Temperature is the factor for both. Is a partially wrong answer. Always remember, always remember, always remember, always remember, always remember. If you are learning environment and ecology from me, Zankrucha is right because I've already told it. It is always T and P. Alright. Anything in the world, you give me T, you give me P, I'll tell you exactly what kind of flora, fauna will be there. Is it absolutely clear? You have to determine whether the temperature is high or low and how much is the precipitation. You just tell me these two things, and I can guarantee you, I can tell you what type of flora, what type of fauna will be there. समझ गए? Temperature and precipitation. It's not pressure. कई साहब केमिस्ट्री चालू कर दिया, टेम्परेचर प्रेशर चालू कर दिया. Precipitation and temperature. All right. High temperature along with high precipitation will give you a tropical rainforest. High temperature with very low precipitation will give you a hot desert. Low temperature with very low precipitation will give you a cold desert. समझ में आया पॉइंट? समझ में आया? फ्लोरा फोना क्या होते हैं? फ्लोरा मतलब होता है फूल, फूल का मतलब पौधा, पौधा का मतलब पेड़, पेड़ का मतलब प्लांट. राइट. तो फ्लोरा हो गए आपके प्लांट, और फोना का मतलब हो गया जो फुदकते रहते हैं इधर उधर, वो होते हैं फोना. राइट. तो जो फुदकते रहते हैं इधर उधर वो होते हैं फोना. सो एनिमल्स आर कॉल्ड एज फोना, फ्लावर्स आर कॉल्ड एज फ्लोरा. ठीक है. सो very very simple, don't worry about it. All right, simple mnemonics in life. आज क्या हो गया आपको? हम ऐसे ही हैं. Increased temperature along with increased precipitation means tropical rainforest. Increased temperature with very very low precipitation. Now someone will ask me, sir ये low precipitation क्या होता है? Precipitation का मतलब होता है सर पानी. It's not बारिश. Again, it's absolutely wrong statement. It can be rain, it can be hail, it can be so many other things. I'll cover it. It's not बारिश, it's पानी. All right. So precipitation, whenever it is less than 25, it is a desert. Is it absolutely clear? That is how a desert is defined. If it becomes 26, it is not a desert. If it is 24, it is a desert. या फिर इसको 250 मिलीमीटर भी बोल सकते हो या 25 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो. जो भी बोलना है बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. Is it absolutely clear? If the rainfall is less than this, it doesn't matter what is the temperature. It has to be a desert. Is it absolutely clear? मेरे से एनवायरनमेंट पढ़ के जा रहे हो, नाक मत कटवाना, कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना. ठीक है. ठीक है. pH is less than 5.6, it is called as acid rain. There is no other definition of acid rain. ठीक है. So desert का मतलब होता है the precipitation in that area is less than 25 centimeter. Okay. Is it absolutely clear? I'll try to clear your concepts as much as possible. तो ये क्वेश्चन तो आंसर तो इसका हो ही ऐसी हो गया ना. बहुत ही सिंपल सा आंसर हो गया ना इसका. तो देखो कितना बेकार क्वेश्चन है. ऑलराइट. फोर्थ कॉम्बिनेशन देयर आर इनफाइनाइट. थोड़ा कम टेम्परेचर, थोड़ा ज्यादा प्रेसिपिटेशन, वो चलता रहता है. कॉम्बिनेशन बहुत सारे हैं. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. सो आंसर इज सी.
Is it absolutely clear, sir and ma'am? Answer is C here. So higher latitude, monotonicity of climate, limited set of full and lower latitude. By the way, biomes are defined by mostly by their flora. Is it absolutely clear? And flora is defined by precipitation and temperature. Is it absolutely clear, sir? Is it absolutely clear? So apply the same concept in statement 2 also. Three of the following criteria have contributed to recognition of Western Ghats, Sri Lanka and Burma as hotspots of biodiversity. वे जब भी हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो एक भैया साहब याद आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, तो उन्होंने क्राइटेरिया दिया था, उनका नाम है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. एक मायर करके भैया थे, तो उन्होंने बोला था कि भाई बायोडाइवर्सिटी जो हॉटस्पॉट होते हैं उसमें तीन चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है. ऑलराइट, तो मायर ने क्या बोला वो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है. देखो स्पीसीज रिचनेस नहीं है तो उसको कौन देखेगा? इजंट इट? इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? Why will I even look at that area if it is not rich in species? Why do I care about conservation of that area if it is not rich in species, right? It doesn't even, it's so stupid, right? Isn't it? So species has to be rich. If species richness ही नहीं है, so how does it even matter? I'm not here to explain hotspots and all, but literally that is what I am doing right now. I gave you an example. I gave you also that there is a guy called as Myers who gave the criteria of hotspot. When how else should I explain what is a hotspot? I can only tell you what is hotspot, right? How else के definition थोड़ी बताऊँ. यहाँ पे 3 Idiots देखी होगी ना. हॉटस्पॉट का मतलब है वहाँ पे स्पीसीज रिचनेस होनी चाहिए. Why else will I conserve that area if it's not rich in species, right? वेजिटेशन डेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता मायर्स को, बट वेस्कुलर प्लांट्स 1500 होता है, वो अलग क्राइटेरिया है, बट लेट्स डोंट टॉक अबाउट इट. एंड दे हैव टू बी एंडेमिक, राइट? लेट अस से दैट स्पीसीज इज फाइंड थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो फिर वो किस बात का हॉटस्पॉट हुआ, राइट? दैट स्पीसीज इज फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो फिर किस बात का हॉटस्पॉट हुआ? चलो यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया है, कहीं और पकड़ लूंगा, इजंट इट? सो स्पीसीज रिचनेस होनी चाहिए, एंडेमिज्म भी होना चाहिए, एंड मान लो दोनों चीजें हैं तो मैं क्यों उसको प्रोटेक्ट करूंगा, राइट? स्पीसीज रिचनेस भी एंडेमिज्म भी है, तो प्रोटेक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है उसको? बिकॉज दे आर अंडर थ्रेट. इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? कॉमन सेंस है ना. लेट्स टेक अबाउट वेस्टर्न घाट्स. हैव यू हर्ड अबाउट नीलगिरी ताहर? ऑलराइट, हैव यू हर्ड अबाउट नीलगिरी ताहर? नाम सुना है इसका, नीलगिरी ताहर? सो नाम से ही जब लग रहा है कि भाई नीलगिरी में मिलता है, तो ये अब अमेरिका में भी मिलने लग जाएगा तो मजा थोड़ी आएगा फिर. ओके, यू अंडरस्टैंड? So it look stupid, right? Let's say golden langur is found in Assam region. Do you understand? So वो golden langur आपको साउथ अफ्रीका में भी मिल रहा है, तो क्या है फिर उसकी वैल्यू, right? Isn't it? So they have to be located in some point, and there has Western Ghats has lot of species, right? पूरा भर रखा है, मतलब ऐसे species 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 species, right? And obviously every day there is one or the other report on Western Ghats, right? इंडस्ट्री बन गई, ये हो गया, ये डिस्ट्रक्शन हो गया, कभी कारगिल कमेटी आ जाती है, कभी ये हो जाता है, राइट? सो obviously it is under threat. So that is the typical example of a hotspot. Will you ever forget a hotspot? Always remember Nilgiri Tahar, basically it's an endemic area. It is a very very high density. अगर वहां पे पूरे उसमें नीलगिरी ताहर ही घूम रहा होगा तो मैं उसको थोड़ी जाके बचाऊंगा. Do you understand? उसके अलावा और भी बहुत सारी स्पीसीज होनी चाहिए ना. Endemism means that that particular species is found only in that particular area and nowhere else in the world. Endemism means that that particular species is found only in that particular area and nowhere else in the world. Endemism means that that particular species is found in only that particular area and nowhere else in the world. बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है. ओके, सिर्फ वहीं मिलेगा सर, वहीं मिलेगा, पक्की बात है. अब आप 7 कॉन्टिनेंट में 7 जूलॉजिकल पार्क बना के वहां पे एक एक छोड़ दोगे तो दैट विल नॉट प्रूव माय hypothesis. It is not indigenous. Indigenous has nothing to do with endemism. Please remember this. Okay. So indigenous is something else. Endemism is something else. Let us say rabbits were indigenous to some other region, right? Let us say India is not an indigenous place for potato, right? But ऐसा कोई इंडियन नहीं है जो साला सुबह से शाम तक पोटैटो नहीं खाएगा, right? So that is a simple argument that though potato is not indigenous to India, but it is not endemic to some other place. Do you understand? It is there with everyone else, right? Everyone eats potato. Same with tobacco, same with tomato. They are not indigenous to India, but they are definitely not endemic to Portugal or some South American country. All right. So is it absolutely clear? For example, you will not find golden lagur anywhere else except in Assam. Is it absolutely clear?
So that is why that region will become a hot spot, because golden langur is endemic to that region. There's very high species richness and there is a threat perception, sir. For example, one horned rhinoceros is only found in that belt, all right, Assam and nearby area. One horned rhinoceros is not found in Africa, all right. इट्स नॉट काजीरंगा, उसके अलावा और भी 50 है, औरांग मानस, आपको पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा, बट पॉइंट इज उसी बेल्ट में मिलता है और कहीं नहीं मिलता. Let's say great Indian bustard is will not be found in Norway. Okay, तो नारकोंडम हॉर्नबिल तो बिल्कुल ही टिपिकल एग्जांपल दे दो, तो वही मिलता है, लिटरली वही मिलता है एक छोटे से आइलैंड में. बट एनीवे, so requirement of the question, you should know the criteria for declaration of biodiversity hotspot by Conservation International. Can you see? At least 1500 vascular plants as endemics. Okay, it has nothing to do with vegetation density. Is it absolutely clear? Vegetation density has nothing to do with it. For example, it is not talking about species. Vascular plant, अब साइंस एंड टेक पढ़ी नहीं आपने मेरे से, तो क्या करूं मैं. चलो जल्दी से बता देता हूँ, पूछ रहे हो तो. एल्गी होती हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं, ऑलराइट. एल्गी जो होती है सिंपल सिंगल सेल्ड मल्टी सेलुलर सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंपल प्लांट होते हैं. ब्रायोफाइट्स को आप प्यार से मॉस भी बोलते हो, टेरिडोफाइट्स को आप प्यार से फंड्स भी बोलते हो, जिम्नोस्पर्म्स को आप नेकेड सीड वाले भी बोलते हो, ऑलराइट. एंजियोस्पर्म्स आर आल्सो कॉल्ड एज द फ्लावरिंग प्लांट्स. इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? Pteridophytes, gymnosperms, and angiosperms together, they are called as vascular plants because they have vasculature. All right. And this vasculature is basically made up of xylem plus phloem. Is it absolutely clear? Any plant which has xylem and phloem is called as a vascular plant. And the plants which have xylem and phloem are pteridophytes, gymnosperms, and angiosperms. Whew. Any plant which has a flower, it's called as. Okay. Why do we care if golden langur get extinct? सर काफी आपने डीप क्वेश्चन पूछ लिया सर. ऑलराइट, सो एक तो ह्यूमैनिटेरियन, कई सारे ग्राउंड्स होते हैं इसके, 4-5 ग्राउंड्स होते हैं. सबसे पहले होता है सेल्फिश ग्राउंड, जो आप जिस आंसर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यू आर डिपेंडेंट ऑन देम, ऑलराइट. इट्स द कॉल्ड एज अ सेल्फिश ग्राउंड, ऑलराइट. if they go extinct, some other species which are dependent on them, they will go extinct, then there is a chain reaction, all right. So something or the other will happen, it will bite you, all right. Second is humanitarian reason. We share a planet with other organisms, so it's our moral and ethical duty to protect them. All right. So obviously, baat hai, because we are much more arguably intelligent than them, it's our duty to protect it, right? There are other reasons also that we padhenge. It has 30% or less of its original natural vegetation. It means that it is threatened, isn't it? So baki ud gayi, 70% is done, and it has to be found nowhere else on the planet. Okay. So very high density, which is endemic of a species, and it has to be threatened. Is it absolutely clear? So let's see this highlighted text, and then above mentioned, let's see again the options. So answer will automatically become C135. Yes or no? Hotspot is only about animal species, and literally लिखा है vascular plants की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हो only about animal species. ये 6 बार तो प्लांट का नाम ले दिया उसने. Vascular plants, high percentage of plants, original natural vegetation. ये 6 बार तो लिख दिया उसने कि प्लांट 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 की बात कर रहा है वो. थोड़ा पढ़ो सर, ज्ञान के चक्षु खोलो. ओके, ओपन योर आईज. टू इंपॉर्टेंट रिवर्स. वन, कंप्यूटर जी क्वेश्चन पेश किया जाए. Two important rivers, one with its source in Jharkhand, known by a different name in Odisha, and another with its source in Odisha, merge at a place only at a short distance from the coast of Bay of Bengal before flowing into the sea. This is an important site of wildlife and biodiversity and a protected area. Which one of the following could this be? A. Bhitarkanika, B. Chandipuransi, C. Gopalpuransi, or D. Simlipal. So answer is A. I have been there. Bhitarkanika National Park, very famous for very famous for salt water crocodile, बड़े बड़े मगरमच्छ 10-10 फीट के. देख लोगे तो 3 दिन तक खाना नहीं खा पाओगे. बिल्कुल बाजू में लेटे हुए थे हमारे. एक बार तो सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे रह गई कि अगर इस शिप को अगर ये 3-4 आ गए ये बड़े बड़े, और मान लो इन्होंने डिसाइड कर लिया कि इसको टॉपल करना है, तो हम कुछ नहीं कर सकते.
ऑलराइट, और दूसरे वहां पे बहुत सारे आपके टाइगर्स भी होते हैं। ओके, अगर चार भाई बोले आज चलो मजे लेके आते हैं इनके, और ऐसे बाजू बाजू में तैरने लग जाए, भाई सांस नहीं आएगी आपको, खाना पीना भूल जाओगे। ठीक है, कुछ नहीं उखाड़ सकते वहां पे उनका आप। ओके, इट्स अ ह्यूज लाइक रिवर लाइक कंडीशन एंड इट्स, दे आर ह्यूज। आई वाज शॉक्ड टू सी देम, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल आर ह्यूज, 10-12 फीट के सर, मतलब दो इंसान तो एक बार में। हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ? ऑब्वियसली वी आर इन अ बोट, सो दैट्स हाउ यू आर प्रोटेक्टेड। मैं को तैर नहीं रहा था उनके साथ इतना भी डेयर डेविल नहीं कर रहे थे वहां पे कि अरे आओ यार थोड़ा एक रेस लगा के आते हैं। So Bhitarkanika is located in Odisha and it is in the estuarine region of Brahmani Baitarni rivers. All right. So been there, done that, and yeah, it is Bharat Darshan पे जाओगे तो आपको भी घुमाएंगे. Sandy and saline areas, the natural habitat of an Indian animal species. The animal has no predators in that area, but its existence is threatened due to the destruction of its habitat. Which one of the following could be that animal? So see, there is no way they are talking about wild ass here, but okay. So Indian wild ass is located in the sandy saline area of Kutch region, and Indian wild buffalo survives in the Terai region. Is it absolutely clear? Sandy और saline region तो बिल्कुल आपका typical गुजरात region होता है. All right, it is very sandy also, it is very saline also, because sea water enters into that semi-desert like condition. It's semi-arid conditions. ठीक है? So again, this is the typical questions which UPSC asks. The Himalayan range is very rich in species diversity. Which one among the following is the most appropriate region for this phenomena? All right, let us discuss this. So it is a high rainfall that supports luxuriant vegetative growth. Here's the nonsense statement, right? It's an absolute nonsense statement. It has less human interference. तो बिल्कुल ही सवाल ही नहीं उठता. Exotic and invasive species have not been introduced in this region. ऐसा कोई रीजन ही नहीं है इंडिया में जहाँ पे नहीं मिलेगी आपको. मतलब confluence of different biogeographical zones. So answer is B. So Himalaya basically rises abruptly in eastern side as compared to western Himalaya. All right. अरे पानी पी रहा हूँ यार, क्या हो गया? So Himalaya and Indo-Burma biodiversity hotspot zones in Himalayan vicinity. All right. सही है. Anyway, so let us get started. Consider the following: CO2, oxides of nitrogen, and oxides of sulfur. Which of the following are the emissions from coal combustion at thermal power plant? All right. So let us get started. Okay. So obviously, if you burn coal, then CO2 has to release, right? Isn't it? It's not possible that you cannot release CO2 if there is no coal burn करोगे तो CO2 तो निकलेगी. Common sense ही बात है. All right. So and everything is released basically. All right. So oxides of nitrogen, oxides of sulfur, everything is released basically. 1, 2, 3. These are one of the most polluting industry on planet and India. But why do we use them then? It's a very good question which people will ask. Why do we use them then? Sir, we use them because 66% our power generation is done from that. 2/3, yes. All gases are usually released by thermal power plant, which you have discussed. Thermal and steel power plants are very polluting heavy industries. Okay. Formation of ozone hole in the Antarctic region has been a cause of concern. What could be the reason for formation of this hole? All right. So presence of prominent tropospheric turbulence and inflow of chlorofluorocarbons, तो बकवास है. Presence of prominent polar front and stratospheric clouds, inflow of chlorofluorocarbons. Absence of polar front, stratospheric cloud and inflow of methane and chlorofluorocarbons. Increased temperature at polar region due to global warming. सबसे बकवास स्टेटमेंट है. क्या होगा इसका आंसर? लगाओ बी या सी. So answer is का B. There is a prominent polar front and stratospheric clouds and inflow of chlorofluorocarbons. Can you remember this? ये काफी बेकार से एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछते हैं कि ओजोन होल साहब एंटार्क्टिका में जाके कहाँ बनता है. समझ लो, हम प्रदूषण दिल्ली में करते हैं तो होल एंटार्क्टिका में जाके क्यों बनता है? सो आंसर इज बिकॉज ऑफ प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट, स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स एंड इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. इज इट क्लियर? So ozone depleting substance like CFC transported to the stratosphere, they release halogen atoms through photosynthesis. It leads to destruction of ozone. So answer is B se baba. Regarding carbon credits, which one of the following statement is not correct?
ऑलराइट, कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है? ओके, द कार्बन क्रेडिट सिस्टम इज रेटिफाइड इन कंजंक्शन विद क्योटो प्रोटोकॉल, यस। कार्बन क्रेडिट्स आर एडवाइज्ड। अब ये पोलर फ्रंट पढ़ाने वाली क्लास नहीं है सर, यही वहां पे आर्टिकल आ जाता है, लेट्स से नरेंद्र मोदी पे, then they go to Lal Bahadur Shastri, then they go to Jawaharlal Nehru, right? Then they go to Chacha Nehru, then they go to Red Rose on his shirt, then Red Rose से वो फिर आपका पान की दुकान पे पहुंच जाते हैं, पान से वो बनारस, राइट, बनारस से शिव जी का मंदिर, राइट, फिर राम मंदिर, फिर अयोध्या वर्डिक्ट, राइट, फिर अयोध्या वर्डिक्ट से राम स्टैच्यू, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू, फिर अहमदाबाद, फिर वल्लभ भाई पटेल से इंडियन सिविल सर्विसेज, फिर मेनन, फिर सिविल सर्विसेज याद आती है, अच्छा आईएएस बनना है। इजंट इट? ऐसा होता है आप लोगों के साथ? दिस इज सो कॉमन ऑन इंटरनेट, एक चीज ढूंढने जाते हो यूट्यूब पे, पता नहीं कहाँ जाके फंसते हो, राइट? फिर एवरीथिंग एंड्स विद क्यूट कैट वीडियोस या पीपल डांसिंग, राइट? वो क्यूट वो ले दे के वहीं पहुंच जाते हैं सारे के सब के सब, वहीं अपने आप कहीं से ही चालू करके पहुंच वहीं जाते हैं, राइट? तो या तो कोई डांस कर रहा होता है आजकल, या कोई कैट या डॉग वीडियो, कुछ ना कुछ क्यूट सा वीडियो चल रहा होता है, बच्चों का, कुत्ते का, बिल्ली का, यही चलता रहता है, राइट? So don't follow this, all right? I have been there. I was just observing my thoughts. This is how the brain works, all right? So regarding carbon credits, which one of the following statement is not correct, all right? So, okay, Amit Kumar, thank you for the recommendation. Remove YouTube recommended videos and more. अच्छा, डाउनलोड करते हैं, एक सेकंड रुको। ठीक है, ओके सर, हो गया, थैंक यू। So the carbon credit was ratified in conjunction with the Kyoto Protocol. All right. Yes, carbon credits are awarded to countries or groups that have reduced greenhouse gas below their emission quota. Obviously, goal of the carbon credit system is to limit the increase of CO2 emission. Yes, carbon credits are traded at a fixed price from time to time by UNEP. In ये बकवास स्टेटमेंट है, इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? तो ट्रेडिंग का मतलब ही फिक्स प्राइस पे कैसे ट्रेडिंग करोगे साहब आप? फिर ट्रेडर्स की जरूरत ही क्या है? फिर ट्रेडिंग का तो पूरा मतलब ही वो होता है ना कि कोई फिक्स प्राइस नहीं होगी, राइट? कॉमन सेंस सेज दैट trading will happen which is not a fixed price, all right? So it can be solved with logic if we don't know about the carbon credit. Common sense says trading would happen at various exchanges across the world and not fixed by one institution. Is it clear? Is it absolutely clear? So if anyone else also wants this, so thanks to my friend who suggested it here, so I've just pinned it, okay? मैंने पिन कर दिया है, किसी को और को परेशानी है तो कर लेना, ठीक है? एंड स्पीड शुड बी फास्ट इन लाइफ, व्हेन यू सी एनीथिंग जस्ट जंप फॉर इट, ठीक है? There is a concern over the increase in harmful algal blooms in the sea waters of India. What could be the causative factors for this phenomena? All right, discharge of nutrients from the estuary, obviously, runoff from the land during monsoon, yes. Upwelling in the seas, all of these basically increase the nutrient supply. So answer is D, 1, 2, 3. It also leads to eutrophication. We'll just discuss this, okay? But these are like fairly simple questions. Discharge of nutrients from estuaries, runoff from the land from monsoon, upwelling in the seas. So answer is D, 1, 2, 3. By the way, this is not a current affair question. 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 This was in news that time, but again, this is not a current affair question. This is again not a current affair question. This is not at all a current affair question. This is not a current affair question. This is not a current affair question. This is not a current affair question. So earlier time static was more. Now it is contemporary issue. Can you see this? So things are changing, but it can go back to 2011 very fast. आप समझ रहे हो? UPSC is very notorious for this सस्ती हरकतें, ठीक है? Very very notorious for these सस्ती हरकतें. All right. So don't trust UPSC. All right. Trust the snake in your house, but don't trust UPSC. All right. It can like really go haywire. ठीक है? किसी पे भी भरोसा कर लेना, UPSC भरोसा मत करना, ठीक है? तो वो कभी भी कहीं से भी कूद के कहीं पहुंच जाते हैं, ऑलराइट? सो ऑलवेज फोकस ऑन इट, ओके? आई हैव बीन ऑब्जर्विंग दिस एग्जाम फॉर ब्लडी 9 years. डू नॉट ट्रस्ट एनी पैटर्न, ऑलराइट? इज इट क्लियर? डू नॉट ट्रस्ट एनी पैटर्न, प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग. देयर इज नो pattern which can be there, all right? It is truly called as unpredictable. There is no, obviously you can predict कि environment के important topics कौन से हैं, but वो ऐसा हो सकता है स्टैटिक से ना पूछ के आपसे डायनेमिक से पूछ लें, डायनेमिक से ना पूछ के स्टैटिक से पूछ लें। ऐसा हो सकता है एक साल एनसीईआरटी से 0 क्वेश्चन आ जाए,
एक साल हो सकता है एनसीईआरटी के ऊपर बिल्कुल ही वो पागल ही हो जाए. So anything can happen. I have seen last 9 years paper very thoroughly. I have personally given all of them. All right. बाकी सब के सब क्वेश्चन सॉल्व किए 900 के 900 बिल्कुल बैठ करके अच्छे से तबीयत के साथ, like an exam hall, and I'm telling you it is very unpredictable. All right. So red data books published by IUCN contains list of endemic plant and animal species present in biodiversity hotspots. हॉटस्पॉट्स, एंडेमिक प्लांट एनिमल स्पीसीज, क्या बकवास कर रहे हैं भाई ये गलत है. थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, यस दिस इज करेक्ट. प्रोटेक्टेड साइट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल, क्या बकवास कर रहे हैं, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. ऑलराइट, सो आंसर इज बी, दैट इज टू ओनली. इट्स वेरी सिंपल, इट जस्ट कंटेन्स द लिस्ट ऑफ, इसका नाम ही है आईयूसीएन रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, मतलब इसका पूरा नाम ही याद कर लो और कुछ नहीं तो मतलब. ऑलराइट, so if you can just remember the complete name, yes it talks about threatened species. Do you understand how common it is, right? लेट्स से एक कन्वेंशन होती है बॉर्न कन्वेंशन, हैव यू हर्ड अबाउट दिस? सो सीएमएस भी बोलते हैं प्यार से बॉर्न कन्वेंशन. इट इज द कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज. उसका पूरा नाम ही याद कर लोगे तो आपका आधा तो काम वैसे ही हो जाएगा. सो basically it is called a IUCN red list of threatened species. Okay, so it is the world's most comprehensive inventory of global conservation state of plant and animal species. It has nothing to do with conservation points and all this thing. It uses a criteria to evaluate extinction risk of thousands of species, and it is relevant to all species, all regions of the world. It has nothing to do with hotspots per se. They're absolutely clear, sir and ma'am. If you can just remember the name of this, you would have solved this. All right, that's why I want you to do it. So please remember this. All these things are very important. Human activities in the recent past have caused the increased concentration of CO2 in the atmosphere, but a lot of it does not remain in the lower atmosphere because of, ये क्या है देखें इसको, ठीक है, इट एस्केप्स इनटू आउटर स्ट्रेटोस्फेयर. ये क्या बकवास है सर, ये तो बिल्कुल ही बकवास कर, बिल्कुल निहायत ही बकवास है. The photosynthesis by phytoplanktons in the ocean. Yes, yes, yes. The trapping of air in the polar ice caps. Yes. That is why we don't want to destroy our oceans and we don't want to melt our ice caps. अगर परमाफ्रॉस्ट गई और हमारे आइस कैप्स चले गए तो साहब CO2 बढ़ जाएगा. आंसर इज C2 and 3. So it never escapes into stratosphere as such, all right, but it circulates within organism ocean atmosphere. In the context of ecosystem productivity, marine upwelling zones are important as they increase the marine productivity by bringing the upwelling का मतलब समझते हो, ठंडा ठंडा पानी, बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी नीचे से आता है, गरम गरम पानी को हटा देता है, उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं. इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? लिटरली इसका ये मतलब होता है ठंडा ठंडा जो नीचे का ठंडा ठंडा पानी होता है ओशियन का, वो ऊपर आता है और वो जो गरम गरम पानी होता है उसको हटा देता है. अप वेलिंग हो जाती है और न्यूट्रिएंट्स ऊपर आ जाते हैं. सब कोई और मतलब नहीं है. ऑलराइट, पता नहीं मेरे टीचर क्या बकवास करते रहते थे यार, कैसी कैसी डेफिनेशन बोलते थे, क्या क्या समझाते, कोई मतलब नहीं है. ठंडा होता है ओशन के नीचे, पानी ऊपर आता है, गर्म पानी साइड में हट जाता है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो ज्यादा मछली होती है, ज्यादा पेड़ होते हैं, ज्यादा पौधे होते हैं, ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन होते हैं. दैट इज ऑल इट इज, देयर इज नथिंग एल्स टू इट. ऑलराइट, बाकी सब अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेट करके समझाने की कोशिश कर रहा है तो उसको खुद को ही समझ में नहीं आता. डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू सरफेस, अरे ये कहाँ से आ गए? न्यूट्रिएंट्स टू द सरफेस, यस. बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस, नो. सो आंसर इज बी से बाबा 2. सो upwelling zones, area जो ठंडा पानी comes up with nutrients and replaces the warmer water. Is it absolutely clear? Obviously nutrients होगा तो phytoplankton होगा, phytoplankton होगा तो zooplankton होगा, तो छोटी मछली होगी तो बड़ी मछली होगी तो शार्क होगी. सीधी सी बात है. गुड फिशिंग ग्राउंड्स होंगे. टिपिकली और अपवेलिंग इज वेरी कॉमन, राइट. सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन, उसका भाई जूप्लैंक्टन, उसका भाई छोटी मछली, फिर मीडियम मछली, फिर लार्ज मछली, फिर एक्स्ट्रा लार्ज मछली, फिर फाइनली शार्क भैया. ऑलराइट, सो वेरी कॉमन. ओके, सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, अरे अभी तो पता है नीचे से ऊपर, अभी तो पता है नीचे से न्यूट्रिशन आ रहा है, ठीक है. With reference to India, consider the following central acts. All right. Import and Export Control Act of 1947, Mining and Mineral Regulation Act of 57, Custom Act 62, Indian Forest Act of 97. ये ज्यादातर एक्ट में हर जगह कुछ ना कुछ होता है. ऑलराइट, तो आंसर इज C 1 2 3 4. हर एक्ट में कोई ना कोई एक लाइन तो मेंशन कर ही देते हैं. तो फिर भी अगर आपको अच्छे से रट्टा मारना है तो 8 एक्ट्स के नाम रट लेना. दिस इज नॉट अ एग्जॉस्टिव लिस्ट बट इट इज अ मियरली इंडिकेटिव लिस्ट. ठीक है, अगेन आई डिड व्हाट लाइक एनीवे. सो गुड टीचर शुड नॉट डू दैट, बट एग्जॉस्टिव लिस्ट में आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, खत्म हो जाओगे. ठीक है, बट जस्ट रिमेंबर दीज 8 एक्ट्स. ऑलराइट,
सो 2011 का हमने पढ़ लिया है अच्छे से। जो पेरिफेरल क्वेश्चंस थे वो भी कवर कर लिए हैं। थोड़ा कॉन्फिडेंस लग रहा होगा कि चलो बैठ करके आधे घंटा दिया तो कुछ समझ में तो आया। चलो 2012 पढ़ते हैं अब। कंसिडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म: बैक्टीरिया, फंगस, फ्लावरिंग प्लांट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्लॉयड एज बायोपेस्टिसाइड? सारे एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया तो होता ही है, बीटी कॉटन, बीटी। फंगस को हम लगाते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधों के साथ लगाते हैं ताकि उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। एंड फ्लावरिंग प्लांट्स ऑल्सो एक्ट एज बायोपेस्टिसाइड्स। दैट एब्सोल्युटली क्लियर। तो किसी ने थोड़ी बहुत भी बायो की एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो दे नो द आंसर। आंसर here is D, 1 2 3 all of them are the correct answers. So next time when you study NCERT, always remember that botany is more important than zoology, is more important than physics, is more important than chemistry. Is it absolutely clear? सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जनरल साइंस में बॉटनी से, उसके बाद आते हैं जूलॉजी से, उसके बाद आते हैं फिजिक्स से, उसके बाद आते हैं केमिस्ट्री से। इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? कोई और टीचर आपको कुछ भी बोले उसकी बात मत सुनना। आई एम टेलिंग यू ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, बॉटनी इज मोर इंपॉर्टेंट देन जूलॉजी, इज मोर इंपॉर्टेंट देन फिजिक्स, इज मोर इंपॉर्टेंट देन केमिस्ट्री। तो अगर कुछ छोड़ना है तो केमिस्ट्री छोड़ना, बायो मत छोड़ के चले जाना, वरना बय से बायो होगा, बय से बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, सो डोंट डू दैट। राइट। सो biopesticides are certain types of pesticides which are derived from such natural materials as animals, plants, bacteria, fungus. What to read from botany? क्या क्वेश्चन है सर? तो सब यही पूछते रहते हैं मेरे से। अभी तो बताया, गो थ्रू द सिलेबस, गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, यू विल ऑटोमेटिकली रियलाइज व्हाट टू रीड, राइट? Anyway, it's my duty to tell you, you joined some science and tech course, so you will realize it. क्या मैं कोई वो थोड़ी हूँ, मतलब रात को मैं सोता हूँ फिर भगवान आते हैं मेरे सपने में कि वत्स इसमें से क्वेश्चन आएंगे, ये बता देना कल जाके, फिर मेरे को एकदम से रेवलेशन होता है, मैं कोई मसीहा बन जाता हूँ। ऐसा थोड़ी होता है। ऑलराइट, आई जस्ट गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड सिलेबस एंड आई जस्ट थिंक दैट दिस इज इम्पोर्टेंट एंड आई जस्ट टेल यू, राइट? सो कंसिडर द फॉलोइंग एरियाज: बांदीकुर, भिटरकनिका, मानस, सुंदरबन। ओके, सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फिनिश हो गया क्या? हाँ सर। पर सीता मैया घर पहुंच गई है, रामायण खत्म हो चुकी है, अब बचा नहीं है कुछ, ठीक है। सो या लेट अस गेट स्टार्टेड। बांदीपुर, भिटरकनिका, मानस, सुंदरबन। ये भिटरकनिका है, अभी मैंने आपको बताया। ऑलराइट, सो इफ यू गो थ्रू इट, सो we have just covered it, so answer is 1 3 4. Okay, no, it doesn't matter whether you have some one or two tiger here or not, but they should be officially a tiger reserve. Is it clear? आपके घर में अगर एक टाइगर घुस जाएगा तो आपका घर टाइगर रिजर्व थोड़ी हो जाएगा। तो आंसर here is बांदीपुर, मानस, सुंदरबन। एंड बार बार ये क्यों पूछ रहे हो, इतनी एनर्जी कहाँ से ला रहे हो? कौन सा काम करवाओगे मेरे से? मैं बोल रहा हूँ क्या पढ़ाई तो रहे, मेरे को कौन सा मैराथन भागनी है 50 किलोमीटर। सो देर आर 50 टाइगर रिजर्व इन इंडिया। पानी पियो, मस्त रहो अपना, कोई दिक्कत नहीं है। एनर्जी कैसे आएगी? मतलब कल पिछली बार बताया था कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, अल्कोहल, दीज आर द ओनली फोर सोर्स। चार देता है, ये नौ देता है, ये चार देता है, ये सात देता है। सारी एनर्जी बस इसी से आती है। ऑलराइट, सो आई डोंट नो मतलब विच एक्स्ट्रा एनर्जी यू वांट, आई डोंट अंडरस्टैंड। कई लोग बोलते हैं इस फूड से ज्यादा एनर्जी मिलती है, इससे कम मिलती है, मैं समझ ही नहीं आता। सो Bhitarkanika is a national park, wildlife sanctuary. Unfortunately, it's not considered a tiger reserve. And which one of the following categories of protected area in India are local people not allowed to collect and use the biomass? All right, let us discuss this very very important question. तो देखो, बायोस्फीयर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेटलैंड, ये तो फर्जी होते हैं, बट जो नेशनल पार्क होता है दैट इज वेरी 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 डेंजरस। इसमें एब्सोल्यूट सब कुछ बैन होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज बैंड है। So answer is national park. It is very strict. It is very stringent. No human activity is allowed whatsoever except some scientists, etc. Okay. So in national park, local people are not allowed to collect and use the biomass. National government protects flora and fauna in this. They don't allow anything. Consider the following statements. Which of the following organisms are agents of pollination? So bat, bee, bird, सब कर देते हैं। Answer is D 1 2 3. This is given in class 12th NCERT. So if you study class 12th NCERT, this is literally mentioned over there. तो पढ़ लेना उसको अच्छे से। बायोलॉजी की काफी क्वेश्चन आते हैं क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी से, यू विल ऑब्जर्व दैट। सो पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड, बीज, बैट्स, बर्ड्स, एयर, वाटर सबसे होती है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज?
Now again, this is a 2011 based question. So 2012 say this has been changed, by the way. All right. So this is a useless question. Is it absolutely clear? So we will not even consider this. This I called as a useless question. Is it absolutely clear? Because उसको पढ़ भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So status keeps on changing, and this type of question depend upon the rote learning of the same year current updates. All right. So we will not discuss this. Which of the following can be threat to the biodiversity of a geographical area? Yes, this is a very important question. Global warming, yes. Fragmentation, yes. Invasion of alien species, yes. Promotion of vegetarianism, भाई ये कौन सा लोड हो गया? वेजिटेरियनिज्म से क्या बायोडाइवर्सिटी होगा एक जोग्राफिकल एरिया को? इट्स नॉनसेंस स्टेटमेंट. सो आंसर इज ए 1 2 3. So that is the right answer. Global warming, fragmentation, alien species, these are very important. So answer is A. Consider the following: black naked crane, cheetah, flying squirrel, snow leopard. Let us discuss them. Which of the following are naturally found in India? इंडिया में चीता तो मिलता नहीं है साहब, इतना तो मेरे को पता है, बचपन में पढ़ा था. राजा महाराजा मार मार के खा गए. ठीक है, ब्रिटिश एरा में, अब तो ना मिलते. तो चीता तो नहीं है. तो चीता है ही नहीं नेचुरली, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया. ठीक है. तो जब चीता है ही नहीं इंडिया में, तो आंसर अपने आप ही बी हो गया ना. सो इतना कॉमन क्वेश्चन, एवरीवन नोज दैट ओ माय गॉड चीता यूज्ड टू एग्जिस्ट इन वन पॉइंट ऑफ टाइम इन इंडिया, बट बिकॉज ऑफ एक्सप्लॉइटेटिव हंटिंग प्रैक्टिसेस व्हिच आर फॉलोड बाय प्रिंसली स्टेट ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा, चीता गॉट एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया. नाउ इट इज फाउंड इन सर्टेन पॉकेट्स ऑफ अफ्रीका. सुना होगा ना. सो Sumasha, what about this statement? So black naked crane, yes. Flying squirrel, yes. फ्लाइंग स्क्वायरल कहाँ मिलता है? ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया सर आपने? जल्दी से बताओ, तो यूपीएससी का क्वेश्चन है यार. ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो. नाम दफा फ्लाइंग स्क्वायरल, फ्लाइंग स्क्वायरल. ठीक है. स्नो लेपर्ड, यस. मसूरी में ही आ जाता है यार. लवासना में किसी दिन घुस के कुछ कर देगा. ठीक है. So black naked crane, flying squirrel, snow leopard. So answer is B, 1 3 4. So black naked crane found in Trans-Himalayan region. They migrate to lesser cold areas in India in winter. Since cheetahs have become extinct, flying squirrel is found in many parts in India. Snow leopard is found in the Himalayas. A particular state in India has the following characteristic. It is located on the same latitude, passes through northern Rajasthan. All right. It has 80% of its area covered under forest. 80%. 80%. It has to be a northeastern state. All right. 80% तो साहब वही होता है. Over 12% of forest area constitute protected area network in this state. तो इस पे तो आंख बंद करके अरुणाचल मार दो. ठीक है. 80% is a very very high. All right. So Arunachal Pradesh matches this with reference to the wetland of India. But आप समझ रहे हो ना किस तरह के क्वेश्चन आते हैं. Now this is an application based question. ये क्वेश्चन आपको किसी मॉक टेस्ट में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा. But you have to just remember that Northeast has it. So you can easily eliminate Uttarakhand, Himachal in this case. Assam is very commercial. All right. Arunachal Pradesh is slightly untouched even today. All right. And obviously you have to make sure that it is located on the same latitude which passes through northern Rajasthan, right? So these are the things which you can, like, it will help you to arrive at the answer. हाँ, जैसे अब की बार पूछा था, दिल्ली बैंगलोर के ऊपर पूछा गया था. So with reference to wetlands of India, consider the following statements. Country's total geographical area under the category of wetland is recorded more in Gujarat as compared to other states. हाँ, ऑब्वियस सी बात है. गुजरात इज द लैंड ऑफ वेटलैंड्स ना. अभी तो बताया आपको, वहाँ पे सैंडी, सेलाइन ऐसी कंडीशंस मिलती है, सारे वेटलैंड. बिल्कुल सही बात है. इन इंडिया द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ कोस्टल वेटलैंड लार्जर देन टू द वेटलैंड. नहीं, ये तो बेकार स्टेटमेंट हो गया. आंसर इज 1. इंडिया हैज मोर एरिया अंडर वेटलैंड्स एज कंपेयर टू कोस्टल वेटलैंड्स. यस, गुजरात हैज more wetlands than any other state, so it is called as the land of wetlands. The acidification of oceans is increasing. Why is the phenomena cause of concern? Calcareous phytoplankton will be affected. Growth and survival of coral reef will be affected. Phytoplanktonic larvae will be affected. The cloud seeding, formation of clouds would be affected. ये कहाँ से आ गया? Formation of clouds, ये कहाँ से? कुछ भी मतलब कुछ भी लिख दो उसमें कि अब की बार सलमान खान मूवी रिलीज विल बी अफेक्टेड. अरे कुछ तो मतलब पॉइंट भी तो होना चाहिए. इसका कोई लेना देना ही नहीं है. कोई जस्ट बिकॉज वो सुनने में अच्छा लग रहा है तो वही बेलते जाओ वहाँ पे. हाँ. So answer is A, that is 1 2 3 only. This is the biggest mistake which people do, right? So सब कुछ इतना ऐसा अच्छा, बहुत बहुत बुरा हो रहा है ओशियंस के साथ. एसिडिफिकेशन हो रहा है, फाइटोप्लैंक्टन मर रहे हैं, कोरल रीफ मर रहे हैं,
फाइटोप्लैंक्टोनिक लार्वा मर रहे हैं, सरकार कुछ करती क्यों नहीं है, क्लाउड सीडिंग नहीं हो पा रही है, क्लाउड नहीं बन रहे, अरे ये कैसे बोल दिया साहब, मतलब कल को बोलोगे दाल मखनी नहीं बन रही और सिस्टिफिकेशन ओशन हो रहा है, सो इट डजंट मेक एनी सेंस, डू यू अंडरस्टैंड? सो इट इज एज एब्सर्ड अ स्टेटमेंट एज दैट, डू यू अंडरस्टैंड? बट न्यूज पे कोई कुछ भी बोल के चला जाता है, दो स्टेटमेंट सही बोलते हैं, तीसरा स्टेटमेंट कुछ भी बोल देता है, और कोई लोग बोलते भी नहीं है कि क्या बोल दिया। सो दिस इज अ यूजलेस स्टेटमेंट, क्लाउड सीडिंग विल बी एडवर्सली अफेक्टेड, ये क्या है, ये कहाँ से आया? ओके, so ocean acidification decrease in the pH of Earth ocean. Yes, coral reef will be affected. Yes, skeleton will be affected. Yes, larva will be affected. Yes, coral reef will be affected. But however, it is not known to have any effect on cloud seeding. The millennial ecosystem assessment describes the following major category of ecosystem services: provisioning, supporting, regulating, preserving, cultural. Yes, PSRPC होता है इसका, provisioning, supporting, regulating, preserving, cultural. Which one of the following is supporting service? ठीक है, ये मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको। इकोसिस्टम बहुत सारी सर्विस करता है हमारे लिए। All right, जैसे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, क्रॉप पॉलिनेशन इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ अ सपोर्ट सर्विस। ऑल राइट, सो प्रोविजन किस चीज का देता है, जैसे आपको पानी मिलता है, आपको खाना मिलता है, उसका प्रोविजन करवाता है, राइट। रेगुलेटिंग सर्विसेज का मतलब होता है जैसे क्लाइमेट कंट्रोल, डिजीज कंट्रोल एक्सेट्रा, राइट। फिर सपोर्टिंग सर्विसेज में आएगा जैसे न्यूट्रिएंट साइकिल, सॉइल फॉर्मेशन, ये सब आता है आपका। ऑल राइट, इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? किसी के दिमाग को डाउट तो नहीं है? सो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, में पढ़ लेना, बट हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको बाद में। What would happen if phytoplankton of an ocean is completely destroyed for some reason? ओके, आपने पूरी फाइटोप्लैंक्टन ही उड़ा दी भाई, बहुत बहुत डेंजरस काम कर दिया आपने तो। द ओशियन एज अ कार्बन सिंक विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। ये इतना पता नहीं कौन सा एग्जामिनर है पेपर बनाता है, पहले ये क्वेश्चन पढ़ो आप, मैं समझ ही नहीं पाता कई बार इन लोगों को। वी वर डिस्कसिंग इट, राइट, डू यू अंडरस्टैंड? So if you see these questions, they quite come from certain like simple points, right? So ये एरिया हो गया, ये हो गया, सब कुछ हो गया, राइट। यहाँ पे आपने एसिडिफिकेशन ओशन पे क्वेश्चन देख लिया, फिर अगला क्वेश्चन फिर से इकोसिस्टम में घुसा दिया, फिर से फाइटोप्लैंक्टन पे आ गया, राइट, इजंट इट? बट इफ यू गो बैक टू 2011, डू यू रियलाइज दैट पता नहीं एक ही टॉपिक के पीछे घुस गया, पागल हो गया, पीछे पड़ गया। ह्यूमन एक्टिविटीज इंक्रीज CO2 इन एटमॉस्फेयर बट लॉट ऑफ डजंट गो इन। सो सेम क्वेश्चन उन्होंने 2011 में भी पूछा है, लिटरली सेम क्वेश्चन है। तो जो लोग बोलते हैं क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, वो गधे हैं बहुत बड़े, क्योंकि सेम क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है कि CO2 इसलिए नहीं बढ़ पाता बिकॉज फाइटोप्लैंक्टन उसको खा जाते हैं, राइट। और सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, अगर फाइटोप्लैंक्टन चले गए तो क्या होगा? ऑब्वियसली CO2 नहीं ले पाएगा ना ओशियन। तो क्या है, जब एक साथ आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको ये यू कैन कनेक्ट कि 2011 का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। सो ओशियन एज अ कार्बन सिंक विल बी एडवर्सली अफेक्टेड, यस। फाइटोप्लैंक्टन्स आर माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, सर, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे सिंस so long, they are microscopic plants. The food chains in the ocean would be adversely affected, obviously, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है फूड चेन का, सब चालू ही वहां से होता है। डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर वुड ड्रास्टिकली डिक्रीज, yes, this is also correct, all right. So lot of gas exchange, heat exchange happens, so answer is D, 1 2 3, absolutely everything is correct. Consider the following statements: Chlorofluorocarbon known as ozone depleting substance are used in the formation of plastic, yes, in the production of tubeless tires। ये कहाँ से आ गया, कौन सा ट्यूबलेस टायर आ गया? आई डोंट थिंक वो ट्यूबलेस टायर में यूज होते हैं। इन क्लीनिंग सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, yes, it is used in cleaning electronic components as pressurizing agent in aerosol can, yes, 100%। So we have not seen कि tubeless tire में, I have not read anywhere कि tubeless tire में use होते हैं। So I don't think so D is the correct answer, I think C is the correct answer। but क्या सब इतना बढ़िया लगता है कि लोग सब D मार्क कर देते हैं, राइट। अरे यार ट्यूबलेस टायर तो बना, अरे यार प्लास्टिक फोम, अरे शाबाश ट्यूबलेस टायर, अरे लगाओ साहब, शर्मा जी ने लगा दिया, आपने नहीं किया, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, यस, बिल्कुल साफ करता होगा। प्रेशराइजिंग एंड, यस, लगाओ, डी है साहब, क्या सोच रहे हो, आगे बढ़ो, हो गया सिलेक्शन। यूपीएससी से अब सीधा लेटर आएगा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से, मुबारक हो आपका बेटा कलेक्टर बन गया। ओके, so this is the thought process of people, all right, so don't go for thought process, use your own brain। so answer is C, 1 3 4। So chlorofluorocarbons are non-toxic. Is it absolutely clear? They're absolutely non-toxic, non-flammable chemicals, but they destroy your ozone layer, so they are very, very toxic to you indirectly. Okay.
containing atoms of carbon, chlorine, fluorine. They are used in manufacture of aerosol sprays, blowing agents for foams, packing materials as solvents, as refrigerants. This is like very very important, and I hope आपको कुछ समझ में आया होगा. अगली बार फिर चालू करेंगे 2013 में. तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट. I'll see you from 2013 to 2019. We'll cover all the previous year question paper of prelims. Thank you and have an awesome day.